क्या इंस्पायर किया आपको कि आप इंडियन एयरफोर्स में जाओ और देश की सेवा करो? But the two most important things which I like and I like to inculcate in my day-to-day life also, one is punctuality, and the second one is commitment. Learning is always my habit. It has always been into me to learn something new. So I started my journey as masters in psychology, and then everything changed. वो जो थॉट्स है ना, वो निकालना है, प्रेजेंट में रहना है। वी नो एवरीथिंग, बट होता नहीं है बिकॉज ऑफ व्हाट आई कैन से टाइम। सॉलिट्यूड का मतलब है आप खुद से खुद के लिए खुद को टाइम दो। फिर लोग बोलते हैं यार हमारे पास तो टाइम नहीं है। So today on The Influencer, we have someone who is disciplined and determined entrepreneur who has begun his journey from Indian Army. He is a master life coach and he is a founder of Elevate Within. So let's explore his real journey from the Indian Army to master of life coach, transforming everybody's lives. Let's welcome Mr. Bharat Rathi on the Uninfluencer episode today. Welcome, Sergeant Bharat Rathi, on our podcast, that is The Influencer. You have been retired from Indian Air Force, and we have different level of respect altogether. So our whole team want to salute you for your work as a Indian Air Force. Thank you so much, firstly, Amruta, for inviting me on the UnInfluencer. And I'm a diehard fan of the UnInfluencer. And I see all your podcast, all your reels. And to be very frank, I was waiting when Amruta is going to call me for the podcast. Thank you, sir. So that the moment you asked me to come, and I said no, I'll come immediately. Very nice. Like nice to hear from you, this sir. I just want to begin with first question. क्या इंस्पायर किया आपको कि आप इंडियन एयरफोर्स में जाओ और देश की सेवा करो? व्हाट वाज इट? व्हाट वाज ड्राइविंग यू थ्रू? राइट फ्रॉम चाइल्डहुड एक सपना था कि आई वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ आर्मी। यूनिफॉर्म में एक अलग क्रेज था। यूनिफॉर्म देखते ही मुझे एक पागलपन छा जाता था कि भाई ये क्या अलग ही बंदा है कुछ। सो आई जस्ट वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द आर्मी, एंड दैट क्रेज स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन क्लास 5. But there was no guidance, and as you know, our time there was no social media, there was no guidance, and I am the first person from my entire society to join defense services. Okay, so after my class 10, I started that time. I was studying in KC College. Okay, so as you go out of Churchgate Station, you used to get the forms out over there. So we used to fill the form and send it for all the exams. So whenever I used to see any joining application coming out, any joining for defense services or any kind of services, so I used to fill the form and just send it. Okay. And the craze drive me over there. And by God's grace, in 2000, I got selected for Air Force also and Navy also, though for the ground duties, but I got selected for both the exams. And that I always wanted to be part of Air Force. I wanted to fly the aircrafts, but the God had some different plans. Instead of flying the aircrafts, I was controlling the aircrafts from ground throughout my Air Force journey. So that was a different experience. So Bharat sir, do you have any sweet memory regards to your all the work which you have done for Indian Air Force with your all the colleagues? So if you can share, I think it will be great for us. There are many memories, like each and every day used to be a memory only. But few of them bondings which we share, still carry on, and which we are still in connect. And we daily WhatsApp, nowadays WhatsApp is there, so all are connected through WhatsApp. And I am connected with the people with whom I have served in 2006 7. I was, because in Air Force we are posted here and there. Like my first posting was in Northeast, and then after that I came to the central part of India. But I'm still connected with the people with whom I have served in Northeast. So you can imagine way down 2003 and today's 2025. So 23, 24, 23, 24 years. Still we are connected. So that is the bonding which we used to share in Air Force. And the best part was we joined around 515 people who joined together in Air Force, and we were going to be trained in Bangalore. And 25 years of our joining date, last year we celebrated in 2025. Wow.
Okay, that was a silver jubilee celebration of our joint basic training. That was called as joint basic training, and we all met at Bangalore. Again, we recreated the moments which we had the day one of our Air Force, and this was after 25 years. So it was a beautiful memory, and still we all are connected. And nowadays it's very easy to. And the best part is wherever I go, I meet some other Air Force person with whom I have served, and just a call away. So I think your network is in whole India. Yes. As a retired army officer, you meet everyone, like your colleagues. I think that is the best part, which you are doing till date. Making memories, meeting them, and everything. So, Bharat sir, what is that one thing which you carry throughout your life from Indian Air Force? To be very frank, there are many things which I carry from Air Force. But the two most important things which I like and I like to inculcate in my day-to-day life also. One is punctuality, and the second one is commitment. Like you must have noticed, a lot of people must be telling you that I'll meet you at 2 o'clock or 3 o'clock, but they come down to you and meet you at 4 o'clock to so that they can show their importance. But that is not showing the importance. When a person is punctual, if he's committed, then only he will be punctual. So these two things go hand in hand, Right, exactly. and that shows the real inner person in these two qualities. If these two qualities are there in the person, that means that person is really a very nice person, and you should are a committed person to do whatever he is committed to you, that he will do this thing for you, or whatever help he will be. And the people holding these two qualities will always be of a helping nature. So I always want to be of a helping nature. So that is why I carry these two qualities. Discipline is another thing. I like to be disciplined, but the day I left my uniform, some indiscipline, as a civil की हवा लगना बोलते हैं ना, तो it came into me. तो वो थोड़ा बहुत indiscipline हो गया, but the driving force is still there. It pushes me to learn a lot. Wow. So discipline makes me to learn a lot. So there is one curiosity regards to this कि after Indian Air Force आपने change ही किया पूरा आपका career and you have started your career in healing, okay, healing people, coaching and guiding them for their lifestyle or lives. So ये किस हिसाब से हुआ, कैसे ये change हुआ, how that thing came in your mind कि मेरे को अभी ये करना है? Psychology was always there in my mind. Psychology में हमेशा से पढ़ना चाहता था. I always wanted to be a psychologist. The human mind is such kind of thing, because being in Air Force, I must have met almost more than 10,000 people in my 20 years of journey. And I found each person is having a different mind, different thoughts. And 2020, after leaving my Air Force, leaving Indian, after hanging my uniform, I started a business also. Okay, so but the period was not good. The corona period was there, and I had faced losses also in those business. So I was always thinking, yeah, why I was doing everything right, but still I faced these losses. Why did I face these losses? Because I didn't listen to myself. Okay, I lost almost my entire earning of my Air Force days. Okay, in that 1 year period. Then another driving force came to me. I should do something different. So I started preparing for banking exams. I'm a banker also. Oh, Okay. So I'm a banker also. So then in 2022 again a force drive to me कि यार time है मेरे पास, शाम का time free होता था. So let's start studying something. Learning is always my habit. It has always been into me to learn something new. So I started my journey as masters in psychology, and then everything changed. November 2, I still remember the date. The date I took admission for psychology, it was 13th of November 2022. I started my journey in masters in psychology. While doing internship for psychology, counseling psychology, there is you have to do a 40 hours ka internship to take ahead your degree. Okay. So while doing internship, my mentor said one thing, भरत जी अगर आपको लाइफ में इस फील्ड में कुछ करना है, then you should keep on learning new things. So then the journey began. Now my profile is like I am a master life coach, internationally certified. I am a diploma holder in modern applied psychology. I am a NLP practitioner, master practitioner, CBT life coach professional, meditation coach, spiritual coach.
numerologist, astrologer, personality development coach, and happiness coach. My God. So this is this learning drive, all, and it is still continuing. इंडियन एयरफोर्स का वो माइंड है ना, पूरा ऐसे वायर्ड माइंड जहाँ पे हर एक चीज मतलब आपके पास है दूसरों को देने के लिए, काइंड ऑफ। तो वो एक वेब बनाना है मुझे कि आपके अगर आप यहाँ आ गए तो मेरे जाल से आप बाहर नहीं जा सकते। आपको यहाँ पे हर वो चीज मिलेगी जो आपको चाहिए, बट मेंटल हेल्थ रिलेटेड। We really want to know what is Elevate Within, why you have started that actually. What was in your mind to start Elevate Within? So elevate within just came to my mind. My first brand was changing lives. Okay, so that was not. I was not feeling like ये changing lives में उस हिसाब से काम नहीं हो रहा जैसे मुझे चाहिए था. Then suddenly something struck me one day. Elevate within was a word which struck me very hardly. Why? Because unless and until you are elevated from your inner thoughts, unless and until you are connected with your inner self, unless and until you elevate yourself from within, this the outer world won't change. So that's why this word struck me. And it was July last year which Elevate Within has started. After my first brand, this was the second launch, and it has gained a good name now. So Elevate Within, I started with a motto of educating people about what is the importance of having a healthy mental life. Okay, then elevate themselves from their inner health, from their inner self, then enlighten them so that they understand why this is really required. And further to that, the next step is added, that is empower them so that they can also use it to make other people's life good. Now, as our tagline also goes, we help people live life peacefully. You must, how many of people have come to you have said that we want to live our life peacefully? Has anyone come and say? Everyone. They will say that I want to live, I want to die peacefully. You will hear this word, this I sentence want to more. live peacefully. I want to live peacefully. I didn't find many of them. So I decided, and Elevate Within, I started with a motto of transforming. It is a vision basically, not a brand also. It is a vision of transforming 5 million lives so that people can start living in positive direction, start living with a positive mindset. And 2035 is my deadline. So I have set this 10 years ka target and 10 years ka goals. In 50 lakh people ka life, elevate to the positive side, and then let's see what happens. The transformation. The real transformation. So your brands more talks about chaos to clarity, which everyone wants these days. कि हर एक के brain में वही है chaos because of the lifestyle, what we live. Okay, every time the human mind is चल रहा है चल रहा है चल रहा है, रुक ही नहीं रहा है, रात को सोते हैं फिर भी वो ह्यूमन माइंड थकता ही नहीं है, वो चलते रहता है, तो chaos हो जाता है. And your brand speaks about that. So how you help people to get out of it, first of all? This is a very nice question, and this is a very required question. As a very simple thing, just go outside this particular office and see people. You will find people only running. You go to any railway station, you will find people only running. Why they are running, they don't know. For what they are running, they don't know. Okay, one simple question, if a person asks to himself or herself, what are the three basic needs of our body, of a human body? Do you have any idea about this thing? The three basic Three needs basic needs of a human body. I think you need food, you need good sleep, and third thing, जैसे आपने बोला, peaceful mind. The three basic needs of our body is only air. हवा नहीं आएगी तो सांस कैसे हाँ लोगे? हाँ. Water. Water. पानी नहीं पियोगे तो आप जियोगे कैसे? Third is gravity, जो आप खड़े हो space में. अच्छा. These Okay. three are the only basic needs for a body, for a human body. बाकी जितना भी है ना, these are the only wants, and we are running only behind our wants. Okay, the basic needs has been forgotten. Okay, so
That is why we have created this chaos by ourselves, and this chaos we have made it our choice. Okay. And that is the reason you will find maximum people are stressed, their anxiety levels are to next levels. Then the next level for anxiety is depression, and you will find most of the people in these three stages. Out of 8.4 billion people on this very planet, on this beautiful planet, you will find everyone is running, or hardly 99% of people are in this circle of chaos. They have created this for themselves. How to gain clarity? People have even forgotten to breathe properly. A simple thing, a simple solution for your daily chaos or just normal stress in your life. Take out 10 minutes for yourself. Okay. Do deep breathing. Only do deep breathing, nothing else. Just focus on your breath for 10 minutes. That's it. And see the change after 15 minutes of that breathing exercise. Nothing else you have to do. So this is a very simple step. We can anywhere you breathe throughout the day. As I've mentioned, air is very important thing, and we breathe. Without breath we can't live. So just breathing properly. If a breathing properly can change your mindset, if it can help you to come out of all the problems, then why can't we give 10 minutes to ourselves? You know, पता तो सबको सब कुछ रहता है. Everyone knows everything. This small thing, breathing or whatever you will say. But you know what? वो इनकलकेशन जो रहता है डेली लाइफ में ना, वो वहाँ पे ही लोग फेल हो जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई फील दैट. Exactly, you're very right. या बिकॉज साइकोलॉजिकली अगर लोगों को जब तक वो बोलते हैं ना, वो भीड़ वाला जो रास्ता है उधर से नहीं गुजरते ना, लोगों को तभी पता नहीं चलता कि क्या भीड़ होती है. वैसे ही है कि वो दिमाग की भीड़ है. आई थिंक योर थॉट्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सो जो थॉट्स है ना, वो निकालना है, प्रेजेंट में रहना है. वी नो एवरीथिंग, बट होता नहीं है बिकॉज ऑफ व्हाट आई कैन से टाइम. And the time is the only problem of this world. Even for me it is. Not for everyone. It is सबके लिए सेम है ये. So ये सब चीजें हैं. आप कैसे उभरना इन चीजों से? Yeah, this is a very nice question, Amruta, to be very frank, because this is the biggest problem each and everyone are facing these days. It's not a matter of time. Okay, everyone has 24 hours only. Even if you go to the richest person on this planet, he also has 24 hours. And you go to the poorest person, he also has 24 hours. But it's all about managing your things. Okay, that is altogether a different topic. People are facing all these problems, as you have mentioned, thoughts. These are not thoughts. These are regression of past or worries of future. Okay. रिग्रेशन ऑफ पास्ट. यार मैंने अगर ऐसा किया होता तो मेरी जिंदगी बदल जाती. उस टाइम अगर मैंने उस लड़की को प्रपोज किया होता तो आज वो मेरी गर्लफ्रेंड होती या वाइफ होती. सो दिस इज द रिग्रेशन. दिस थॉट्स दे आर कैरिंग ईच डे. ओके, व्हाई टू कैरी? अगर आप 10 किलो का बर्डन लेके, अगर आप 10 किलो का आटे की बोनी अगर आपको लेके यहाँ से 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो आप चलोगे 2 किलोमीटर? नहीं चलोगे ना. आप क्या करोगे? बीच में रिक्शा कर लोगे या कुछ ऐसा. यू विल टेक समथिंग फॉर एन इजी ट्रैवल ना. या आप उसको छोड़ दोगे, बोलोगे यार तू डिलीवर कर दे घर पे. बराबर है ना. तब उसको छोड़ने का मतलब क्या है? यू आर लीविंग द बर्डन अवे एंड यू आर वॉकिंग फ्रीली. So this is the most important thing. Why people face trauma? Okay, why people face trauma? Because of these reasons. Because they carry those things, they carry those thoughts, they carry everything. जितना ज्यादा बोझ होगा आपके कंधे पे, उतनी ज्यादा डिफिकल्टीज होगी ना. वरीज ऑफ फ्यूचर. डू यू रियली नो कि आप कल सुबह उठने वाले हो? डू वी नो? आई डोंट नो. नो वन ऑन दिस प्लैनेट कैन से दिस थिंग कि मैं कल सुबह उठने वाला हूं. बट स्टिल रात को हम अलार्म लगा के सोते हैं ना. दैट इज अ बिलीफ. बट कीप ऑन वरिंग अबाउट, यार मेरे पास बाजू वाले ने यार ये गाड़ी खरीदी, मुझे ये गाड़ी खरीदनी चाहिए. तो दैट इज ऑल्सो point of worry. Comparing yourself. Stop comparing yourself. Everyone has got his own life. जब हमें ऊपर से नीचे भेजा गया ना, आपको एक डिजाइन करके भेजा गया है, आपकी पूरी लाइफ को डिजाइन करके भेजा गया है. लेट द फ्लो कंटिन्यू. आप अननेसेसरी अपने ऊपर प्रेशर क्यों ले रहे हो? हम अपने ऊपर इतना प्रेशर लेके क्यों चल रहे हैं? प्रेशर कुकर थोड़ी है, हम इंसान है नॉर्मल.
जिस चीज के लिए आए अपने कर्म करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ अननेसेसरीली। कितने सारे ऐसे थॉट्स होंगे जो आज भी आप कैरी करके चल रहे हो, एम आई रॉन्ग? Actually, यस और सो यू शुड व्हाई टू कैरी दोस? आज you cannot rewind your life, there is no rewind button in our life, is it? Then why to carry those things? जो बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला है वो आएगा अपने आप। उसके बारे में सोच के अपने आप को क्यों आज क्यों बिगाड़ना है? Why to lose your present? That's why I always tell people to be mindful. That is very important thing, to be mindful. बट ये जो माइंडफुल वर्ड है, हर एक का अलग अलग अपना अपना उसका नजरिया रहता है देखने का, या तो Okay. हर एक का अपना अपना थॉट रहता है व्हाट इज माइंडफुल। Hmm. मैं कुछ और बोलूंगी आपको, कोई और कुछ और बोलेगा माइंडफुल जो है उसके लिए। एग्जैक्टली एज अ भरत राठी, एज अ कोच, Hmm. what is exactly the mindfulness one has to have in themselves first of all? Okay. मेरे को खाली इतना पता है माइंडफुलनेस मतलब एक तो हमारी हैबिट्स है वो अच्छी करो, फिर ये है, लेकिन क्या है मतलब ये सब चीजों में ना कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहता है। हम लोग पकड़ने जा रहे हैं कुछ और कुछ दूसरा ही छूट रहा है हाथ से। सो एग्जैक्टली व्हाट इज माइंडफुलनेस ऑल अबाउट? माइंडफुलनेस इज, ये सब किसने बताया आपको? मुझे नहीं पता कि ये हैबिट सुधारो, वो करो, ये करो। माइंडफुलनेस इज ओनली, दैट वर्ड हैज ओनली वन मीनिंग, बी इन प्रेजेंट, लर्न टू बी इन प्रेजेंट। लाइक अभी हम जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आई एम एट प्रेजेंट। मैं ना तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे गाड़ी पकड़नी है, ना मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी आधे घंटे बाद मुझे क्या करना है। आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग। व्हाट विल हैपन, दैट विल हैपन, दैट विल बी आफ्टर हाफ एन आवर ना। Right now, what we are doing, I am conversing with you. That is important. If I am not at present, I won't be able to answer as I want to. If I keep on thinking here and there, will I be able to convey what I really want to convey? So mindfulness is very simple word. Learn to be in present. ठहराव लाओ जिंदगी में. स्टिलनेस, Stillness. जो हमारे Steadiness. It's किसके better पास to भी call नहीं है। not stillness, steadiness. स्टेडीनेस, या That is very important. आप यहाँ वहाँ क्यों भागना है हमें? किस लिए भागना है? आप कितना ही भाग लोगे आपको मिलेगा तो उतना ही जितना आपके लिखा हुआ होगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आप चाहे कितनी भाग दौड़ कर लो, कितने ही पत्थर तोड़ लो। So always mindfulness is very simple thing and it's very easy to understand. That's why elevate within में, why what elevate within, you asked that question earlier na? Elevate within is just like an Amazon of mental health and wellness. When I started this journey of elevate within, I found जो chaos वर्ड आपने बोला ना, तो ये मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस में पूरा chaos फैला हुआ था। आपको आज की तारीख में हर गली में हर नुक्कड़ पे कोच मिलेगा, 100%। है ना? बट इज दैट कोच रियली वर्थ? डज ही नो रियली व्हाट लाइफ कोचिंग इज, और डज ही नो व्हाट हैप्पीनेस कोचिंग इज, और डज ही नो व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस कोचिंग इज? और अभी तो और हर एक चीज का अलग अलग कोच भी आ गया, तो पता Exactly. नहीं चल रहा कि हमारा प्रॉब्लम किस रिलेटेड है। Exactly. प्रॉब्लम तो पता चले Exactly. फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एलिवेट विदिन में हमारे पास में, जैसे अगर आप कभी हमारे वेबसाइट विजिट करोगे elevatewithin.in, so you will find a specialist for each and every problem. Like if person is facing a relationship issue, then we have a specialist relationship coach. If a person is facing career issues, we have a specialist who is specialized in that particular field. If you want healing, suppose you are seeking for sound healing, you are crazy about sound healing, so we have a person, she is one of the only hand pen sound healers. So it is just like an Amazon, and this network is not only spread across in India, it is now touching global boundaries also. We have a mindset coach, she is from United States, so she specializes on mindset, how an entrepreneur should keep his mindset, how a student should keep his mindset. So she is specialized in that field. As a pneumologist, we have a specialist for pneumology who has handled 10,000 plus cases, 10,000 plus clients. So this is what the real need is. So elevate within is a one-point solution, one-stop solution for each and everything. People want to learn things,
People want to learn how to do life coaching. People want to learn about numerology. People want to 99 रुपीज में 1000 रुपीज में 999 में दुनिया भर के कोर्सेज मिलेंगे आपको इंस्टाग्राम में. Thousands of courses you will find it on Facebook. But are they really worth? We have also started training people now. Because as I mentioned earlier, ki I need what my vision is of transforming 5 million lives. It's not a small number. It is 50 lakh people's life. It's not possible to do it all alone. I need a team. So वो team create करने के लिए we have started teaching them. And we have started onboarding on our platform, Elevate Within, with a concept called learn and earn. You learn from us and earn with us. Very nice. So, like empowerment, I said about our motto is educate, elevate, enlighten, and then empower. So they become self-empower. वाओ, सच अ गुड थॉट. ये एक चीज मुझे और आपसे पूछनी है कि जब भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था कि लोगों को अपनी खुद की प्रॉब्लम ही नहीं पता रहती है. Exactly. जैसे कि मेरे को क्या चाहिए जिंदगी में, पहली बात. जैसे आपने 3 तो बोले ही, बट वांट तो रहने वाला ही है. नीड तो नेचुरली है, नेचुरली वो जो चाहिए उसके बिना ये बॉडी ही नहीं है. वांट तो होगी ही, बिकॉज as a human being we all are materialistic first of all. Okay. Yes. तो ये जो चीज है, जो हम लोगों को ये जो प्रॉब्लम है खुद का, वो पता चलना चाहिए. वो प्रॉब्लम कैसे पता करना है? क्योंकि आई फील आई वांट टू बी हैप्पी. आफ्टर दैट मेरे पास तो पैसे ही नहीं है. उसके बाद अरे मेरे को तो रिलेशनशिप इशू भी है. तो ये जो है ना, ये सब एक से एक जुड़ा है. ओके, बिकॉज एज यू सेड योर इनर सेल्फ इज मोर टूवर्ड्स आउटर. ओके, तो ये जो चीज है ना, इसमें से रास्ता क्या निकालोगे आप? क्या ये अपने व्यूअर्स को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, सो आई नीड दैट आंसर फ्रॉम यू, विच एटलीस्ट जो देख रहे हैं उनको एटलीस्ट पता चले कि इंस्टेंटली क्या होना चाहिए उस चीज का. फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट थिंग, हम नूडल्स नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, तो Yes. इंस्टेंटली कुछ नहीं होगा. यू नीड पेशेंस. टाइम लगेगा हर चीज को. अगर कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो पहले आप नींव खोदोगे अच्छे से, उसको नींव को भरोगे अच्छे से, फिर आप बिल्डिंग खड़ी करोगे. जितनी नींव मजबूत होगी उतने आप मजबूत होगे. Why I am taking out this point? People को सब कुछ इंस्टेंट नूडल की चाहिए, मैगी के तरह चाहिए. मैगी 2 मिनट बन जाती है, बनाओ खाओ हो गया. बट हैज एनीवन थॉट कि 7 दिन लगते हैं उस मैगी को पचाने के लिए? नो वन थिंक्स अबाउट इट. सो दैट इज डिफरेंट इशू. नाउ हर चीज के लिए एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका फॉलो करना होता है. लाइक पीपल नो अबाउट जर्नलिंग, बट डू दे रियली फॉलो? नहीं फॉलो करते. वेरी सिंपल थिंग. आप एक बुक बना लो अपने लिए, एक नोटबुक बना लो छोटी सी. फर्स्ट पेज को एक तरफ अपने नीड्स लिख लो, बेसिक नीड्स, व्हाट इज नीड फॉर योर सर्वाइवल. दूसरी तरफ आपके वांट्स लिख लो. बेसिक नीड्स में आपका फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब कुछ आ गया. राइट साइड में आपके वांट्स लिख लो. 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, एरोप्लेन या पर्सनल हेलीकॉप्टर, पर्सनल हेलीपैड, जो लिखना है लिखो. एवरीथिंग यू कैन राइट डाउन. These are your wants. Wants can be anything. Anything. It can be anything. Okay. So then you just really sit down with yourself, which is called as a state of solitude. Okay. State of solitude is very important. That's why I suggest all my clients to at least sit in state of solitude each day for at least 15 minutes. सॉलिट्यूड का मतलब है आप खुद से खुद के लिए खुद को टाइम दो. ठीक है. फिर लोग बोलते हैं यार हमारे पास तो टाइम ही नहीं है. टाइम सबके पास होता है, बट हम एक सिंपल सॉल्यूशन है. आप अपना फोन चेक करके देख लो कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है. आप अगर 4 घंटा स्क्रॉलिंग करने में वेस्ट कर सकते हो, तो आप 15 मिनट खुद के लिए नहीं निकाल सकते. What exactly you're getting from those reels? Instant dopamine. Then right now this is the correct word. Exactly. Which people need. Exactly. But they don't look for a longer period of time. Period of time. ये चीज जो है वो इंस्टेंट नहीं होती जैसे आपने बोला. Exactly. I also watch reels. मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं because मैं भी इसी दुनिया का इसी जमाने में जी रहा हूँ. I also watch reels. I also do Facebook. I also do Insta.
This we will be posting on Insta, Facebook, everywhere on the Obviously. social media platforms. But there is a limit. Like you should limit your screen time. संडे को मैं फोन को हाथ नहीं लगाता. संडे को मेरा फोन का स्क्रीन टाइम मुश्किल से 10 या 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट होगा. बाप रे. ओके. संडे को चाहे मुझे कोई फोन करके ये बोल दे कि सर मैं आपको 1 करोड़ का क्लाइंट दे रहा हूँ, सर मैं बोलता हूँ जय श्री कृष्ण, मुझे नहीं चाहिए. मेरा वो टाइम मेरे फैमिली के साथ का है. आप मंडे को सुबह मुझे 5 बजे फोन करो, मेरे को चलेगा, बट संडे को नहीं. सो दैट रिस्ट्रिक्शन, दैट बाउंडेशन आई हैव गिवन टू माई सेल्फ. If I am waking up at 5 o'clock, I touch my phone at 7 o'clock. I don't touch that phone for 2 hours because that is my time. That is really me time. So this is how I inculcated this thing and built up. तो मेरा स्क्रीन टाइम बहुत होता है because most of my clients are online only. आज ऑनलाइन वर्ल्ड है. Right. So my clients are from Bangalore, from Hyderabad, from US, from UK, then from Jaipur. So I have clients at all around India. तो उनसे मैं ऑनलाइन ही मिलना है मुझे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. लेकिन एक आपका अपना आपका टाइम 24 आवर्स आपको एनालाइज करने की, आपको वो 24 आवर्स बिताने कैसे हैं, 81,600 सेकेंड्स आपको कैसे स्पेंड करने हैं दिन के. इट इज योर विश, योर विल. So basically, Bharat sir, you work on people's subconscious mind, right? Which I can see in your profile. तो daily routine में how you should do it, like subconscious mind, conscious mind, इसका जो झमेला है हम लोग जो बोलते हैं, ओके, अपने जीवन में ये कैसे सीधी तरीके से, अच्छे से, ईज से हम आत्मसात करें हमारे में. फर्स्टली सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड तो ये है कि सबकॉन्शियस माइंड इज ऑटो पायलट. जैसे सपोज करो हम सुबह उठते हैं, वी गो फॉर आवर नॉर्मल रूटीन. हम ब्रश करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता कि ब्रश लेके उस पर टूथपेस्ट लगाना है, क्यों? बिकॉज अपना ब्रेन ऑटो पायलट मोड में वो कर लेता है. सो दिस ऑल थिंग्स आर बीन डन बाय योर सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड गिव्स यू हाउ टू एक्ट ऑन फियर. आपको कैसे किसी सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, बिकॉज अब हमने हमारे माइंड को उस हिसाब से ट्रेन करके रख दिया है. कॉन्शियसली हम दो चीज करते हैं कि अगर जो सपोज इमीडिएटली अगर कुछ हो रहा है तो कॉन्शियसली वी डू समथिंग. जैसे अगर रिंग हुआ फोन तो वील जस्ट पिक अप द फोन, दैट विल बी योर कॉन्शियस माइंड इज डूइंग दैट. बट पीपल वर्क ओनली ऑन दिस. हम इन दो माइंड के बीच में ही अटक के रह जाते हैं. अब हमने सबकॉन्शियस माइंड के इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते. तो unlearning and reprogramming your subconscious mind is very important. So the best thing is you start tapping your unconscious mind. Okay, so that is what we help in. We come into picture. We help you out to tap your unconscious mind, the real mind, which is called as, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, सोल बोलते हैं, या जो भी हम बोले उसको. ठीक है. सबकॉन्शियस माइंड है बंदर, वो कहीं भी भागेगा. ठीक है, वो यहाँ वहाँ उल्टी गुलांटी मारते रहेगा. So like even if we are sitting over here, mind is, we are even roaming in France, और even we are कि घर पे क्या चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, या वाइफ क्या कर रही. तो these all things will be happening by your subconscious mind. It is like a monkey, it will always keep on hopping here and there. So to control that mind, we should tap our unconscious mind. Who is the real mind? Okay. If we start tapping our unconscious mind, we will be able to control our subconscious mind, and we will be able to unlearning the things which we want to change in our life. Okay. Unlearning के लिए जैसे लोग बोलते हैं 21 दिन लगते हैं, 60 दिन लगते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं. Unlearning के लिए आपको 3 घंटे में भी आप unlearn कर सकते हो. Okay. Sorry. So it is like, it's not impossible, but unlearning is a process. कुछ tips, any tips for it? लाइक आई सेड यू कि आप सपोज करो हम एक हैबिट में हैं कि हम रोज सुबह उठ के हम सबसे पहले फोन उठाते हैं, और भी कुछ करने से पहले वी पिक अप अ फोन. सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जस्ट डू वन थिंग. सबसे पहले तो रात को सोते टाइम आपका फोन अगले रूम में रख दो, आपके पास में रखो ही मत. अलार्म क्लॉक खरीद के ले आओ, 100-200 रुपए मिलेगी आज के तारीख में, तो बहुत सस्ती हो गई क्योंकि बिकती ही नहीं है मार्केट में. ठीक है, वो लाके लगा लो, फोन को अलग कमरे में रख दो. तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये, आपका हैबिट चेंज हो जाएगा कि फोन हाथ में नहीं आएगा, है ना. फिर आपको आधा घंटा मिलेगा, जो मैं 15 मिनट आपको बोला कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, टाइम स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ.
सो वो आधा घंटा मैंने आपको निकाल के दे दिया आपकी लाइफ में, राइट. है ना? नहीं तो हम सुबह उठते ही 10 रील तो आराम से स्क्रॉल करते हैं। 10 रील मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट चले गए। तो 10 मिनट और 5 मिनट फ़ोन उठाने ले जाने में, ये करने में, व्हाट्सएप चेक करने में जाता है। तो 15 मिनट का टाइम तो आपको, और 15 मिनट्स आपका डेली चोर्स करने के लिए, ब्रश करना है, फ्रेशन अप होना है, तो 15 और आधा घंटे का समय आपको खुद के लिए मिल गया ये। तो this is the small steps. These are called as baby steps, which we should start inculcating to unlearn your subconscious mind. So unlearning is very important. Bharat sir, you have diagnosed with many clients of yours. Okay. बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी आपने ठीक किया है, मेंटल हेल्थ जो भी है उसमें. तो फिर आप उनका नाम मत लीजिए, बट आई जस्ट वांटेड टू नो द स्टोरी of their self and something you can share with our viewers कि ऐसा ऐसा हुआ था and then you just did this as a elevate within. तो कुछ उसके ऊपर आप बता सकते हो. क्लाइंट्स तो काफ़ी सारे आए गए, बट एक बहुत स्पेशल क्लाइंट आया था मेरे पास. मतलब he took 3 months to come to me. Okay. So the very first time he tapped me was last year in April. He messaged me. एक मेरा कुछ उसने ऐड देखा था, ऐसे मैं फ्लायर बनाता था खुद से, और ऐसे जस्ट आई यूज्ड टू स्प्रेड ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड लाइक दैट. सो ही जस्ट सॉ इट एंड ही जस्ट मैसेज्ड मी, सर आई वांट टू टॉक टू यू. सो एंड आई सेड ओके फाइन, व्हेनेवर यू आर फील जस्ट टॉक टू मी. उसके उसका कोई मैसेज नहीं आया, ही जस्ट घोस्टेड. Okay. Okay. Again after 2 months he messaged me, sir I want to meet you personally. I said, you let me know whenever. Last time also you messaged me, you never turned up back, and again you are messaging after 2 months. So मैं बोला ठीक है चलो, let's meet up. Again he ghosted me for a month. Okay. Then in July I got a call. Okay, sir, I am standing over here near your office. I want to meet you immediately. Okay. So I even didn't recollected his name properly, to be very frank, because 2-3 महीने में एक बार मेरे को ऐसे ही टैप करके चला जा रहा है, जैसे वो ऐसे थप्पा मार के चला जाता था मुझे. तो but when I went and met him, he was a 29-year-old guy. Okay, 29-30 के बीच में था. Very frustrated. मतलब इतना ज़्यादा frustrated था वो, उसके चेहरे पे से दिख रहा था कि अगर वो he has even attempted for suicide. Okay, because of the chaos in his mind, the chaos with it, which were bothering, the thoughts which were bothering him too much. He just, the time he met me, he was like, सर मुझे अभी का भी आपसे बात करना है, अभी का भी आपसे डिस्कस करना है, बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में, मैं मेरा जॉब छोड़ दूंगा, मैं मेरी वाइफ को छोड़ दूंगा, मैं ये दुनिया को छोड़ दूंगा, एंड लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, जो बोलते हैं ना, एक हीट ऑफ द मोमेंट, अंदर ही अंदर जो लड़ता हुआ इंसान होता है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है, अब उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है लाइफ में. सो आई सेड जस्ट काम डाउन. उसको मैंने ठंडा पानी पिलाया पहले तो आराम से, बोला ठंडा पानी पी पहले तो आराम से, फिर अपन बात करते हैं आराम से. आई जस्ट टेक टुक मैंने अपने बॉस से परमिशन लिया, सर ऐसा ऐसा है कि मुझे एक अर्जेंट काम आ गया था, आई एम जस्ट लीविंग. एंड आई टुक हिम एंड वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट एंड वी सैट ओवर देयर. I spoke with him for around 2 hours, 2.5 hours. We were just normal conversation was going on. I said, okay, fine. We'll just start your session immediately. So we'll do it online. Okay, because that time I hadn't set up my clinic or something like that till that time. So I said we'll work online because then my office timings and his office timings were also not matching. So we started early morning का session. मैंने उसको बोला यार भाई देख, मैं सुबह के टाइम तेरा सेशन लूंगा अगर तुझे पॉसिबल होगा तो, बट विल ये सब क्लियर हो जाएगा 2-3 महीने में भी नहीं, 2-3 या 4 सेशन में मैं सब क्लियर कर दूंगा. इट्स मैक्सिमम टाइम. द फर्स्ट सेशन आई टुक वाज ऑन 29th of July. Okay, very first session I took 29th of July, early in the morning 5 a.m. My God. Okay, early in the morning 5 a.m. and he was ready before me. तो 5 a.m. का मैंने उसको Zoom लिंक सेंड किया हुआ था, तो ही वॉज रेडी बिफोर, ही वॉज ऑलरेडी ईगरली वेटिंग फॉर मी. सर मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ, 4:50 ही मैसेज मी, सर मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ. सो द फर्स्ट सेशन वेंट वेरी वेल. 5 to 7 I just try to understand all his problems. We discussed in details, in depth, because कॉन्फिडेंशियलिटी अगर मेंटेन करने के लिए हम ज़्यादा तो नहीं बता सकता उन प्रॉब्लम्स के बारे में, बट
I found that 4 major problems in his life was, as I mentioned earlier also, he was too much worried about his future. He was like too much burdened about his future. उस प्रेशर में he was not able to perform well in his office. ठीक है, स्ट्रेस इतना ज्यादा था, उसका वर्क ऑफिस का वर्कलोड इतना ज्यादा था, प्लस उसके रिलेशनशिप में भी उस वजह से प्रॉब्लम हो गया, वाइफ के साथ उसका बहुत प्रॉब्लम्स होने लग गया था, तो उसको वाइफ से भी सपोर्ट नहीं मिलने लग गया। एक बेटी थी, उस बेटी है उसकी हार्डली 3-4 इयर्स की, 3-4 अभी 4 इयर्स की है बच्ची उसकी, एंड उसका उसके साथ भी रिलेशन ठीक से नहीं चल रहा था। वाई? बिकॉज वो ऑलरेडी इतना स्ट्रेस में था, लोन्स, होम लोन, ये लोन वो लोन, प्लस ही डिडंट हैड एनी सपोर्ट फ्रॉम हिज फैमिली और एनीथिंग। तो फर्स्ट सेशन वेंट ऑन, वो चला गया। सेकेंड सेशन आई गेव हिम मेंटल स्पा और माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। ओके, so I just calmed down him and cleared all his traumatic thoughts, all his problems which were piled up so much for 29 years. So right from I did a child healing, inner child healing. उसके ऊपर मैं just used that technique. Then I made him to forget all those things. You won't believe, after the second session, second session happened early in the morning on 6th or 7th of August, एक हफ्ते के बाद में। इवनिंग ही कॉल्ड मी एंड सेड मी कि सर मेरे को आज कोई थॉट्स ही नहीं आ रहे सर। सर दिस इज अ वंडरफुल न्यूज़, अगर आपको कोई थॉट्स ही नहीं आ रहे हैं आज, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा होगा आज। बोले सर मेरे को थॉट्स ही नहीं आ रहे हैं, मैं करूँ क्या? मैं इतना सोचने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे सोच नहीं पा रहा हूँ मैं कि मैं करूँ क्या। मतलब काम का दिन कैसा रहा? मतलब काम का दिन सर मैं आज सबसे अच्छा परफॉर्म किया मैंने आज अपने लाइफ में। तो वन प्रॉब्लम गॉट सॉर्टेड आउट कि उसको जो थॉट्स आ रहे थे, जिस वजह से ही वाज कैच्ड अप, ही वाज होल्डिंग हिमसेल्फ बैक। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया पहले भी आपको, अगर हम पुराना वजन लेके चलेंगे अपने साथ में, तो क्या हम आगे चल पाएंगे आसानी से? हम रुकते रुकते चलेंगे, हम अपने आप को रोके रहते हैं, है ना। जैसे हमने आपको चेन से बांध दिया और पीछे वो चेन को दीवार में खूंटा गाड़ दिया, तो हम अपने आप को रोक के रखते हैं। चेन को खोलो ना यार, आगे बढ़ना सीखो ना जिंदगी में। So that's what I did. I didn't did much. I just applied a simple technique. In the third session, which happened to be on 16th or 17th of August, it was like I just tried to understood his relationship with his wife. Why and where the problem was. The problem was very simple. They never used to communicate with each other. Oh, communication. The biggest problem. The biggest problem in present era. Communication. Communication with each other is very important. To maintain a healthy relationship, you should communicate with each other. So I just called his wife also. I said, आप खाली एक बार है ना एक काम करो, शाम को दोनों जन डेट पे चले जाओ। Okay. And what to talk? I'll send वो मैसेज कि ये क्वेश्चन ही पूछना है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछना है। That is very important. Go on date. Anyone can get you. But क्या पूछना है, क्या बोलना है? क्योंकि हम हमारे साथी के साथ जाते हैं, बट हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं कि क्या पूछना है। हम जाते हैं तो हम ये करते हैं ना। हाँ हाँ क्या, हाँ, दिस इज व्हाट वी डू। इससे अच्छा फोन को रखो बैग में एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग, which I have learned from my wife. Okay, to spending quality time. This is what is missing in the relationship these days. Spending quality time. Okay. तो जस्ट आई मैसेज देम कि हाँ, तो उसकी वाइफ को मैंने मैसेज किया, आप यही क्वेश्चन पूछना, उस हस्बैंड को मैंने पूछ के आप यही चीजें पूछना, उसके अलावा कुछ नहीं पूछना, इसके बाहर का आउट ऑफ द सिलेबल्स कुछ नहीं पूछना। ठीक है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हिज वाइफ कॉल्ड मी एंड सेड मी कि यार यस्टरडे ही वाज बिहेविंग वेरी डिफरेंट, आज तक उसने मेरे से इतने प्यार से कभी बात ही नहीं की। ही ब्रॉट मी रोजेस, ही ब्रॉट अ चॉकलेट फॉर मी, आज तक उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। मैं बोला किया ना उसने, पहली बार किया तो सही ना, नाउ यू शुड अप्रिशिएट इट ना। एंड within 7-8 days the relationship became very nice. December he messaged me, sir, now I don't even want to quit my job, I don't even want to quit my I don't even want to be separated from my family, and I have no thoughts from my past now. And he thanked me like a bundle of thankful note he just sent me. He sent me good chocolates also. Ferrero Rocher की chocolates का एक पैकेट भेजा उसने मुझे। So I was like चलो बहुत अच्छी बात है। किसी के तो लाइफ में you have enlightened something.
एंड इट टुक टाइम, 3-4 महीना लगा उनको वापस से। उसके बाद हार्डली 1 or 2 times वी हैड कन्वर्सेशन और व्हाट्सएप या एक आधा कॉल हुआ होगा अक्टूबर नवंबर में, तो अक्टूबर में वी हैड अ कन्वर्सेशन। बट आई व्हाट आई डू, आई डोंट बिलीव इन होल्डिंग बैक क्लाइंट्स टू मच, कि भाई 4 लोग अगर बोलते ना मैं 7 सेशन में ठीक करूंगा, मैं 8 सेशन में आई सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, आई विल डू, तो पीपल, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, पैसा मेरे पास बहुत है, मैं अच्छे से भगवान की दया से आई एम हैविंग अ गुड जॉब आल्सो एंड हैविंग अ गुड पेंशन आल्सो, सो आई एम नॉट वर्किंग फॉर मनी, आई एम वर्किंग टू क्रिएट अ चेंज इन पीपल्स लाइफ, अ पॉजिटिव चेंज इन पीपल्स लाइफ। देन पीपल आस्क मी क्वेश्चन, तुम पैसे क्यों लेते हो? मैं बोला भाई फ्री की वैल्यू नहीं है, मैंने फ्री में देके देख लिया। So this is what happens. So I don't charge much, but I charge. Obviously, it is your Obviously, time. yes. And But one thing is for sure, if someone commits you 10 sessions, I will do it in 5 sessions. That is for sure. very nice. 50% तो आपका ऐसा ही बच गया, 50% डिस्काउंट होगा। बस क्या होता है किसी भी चीज में, मैंने एक चीज समझी मेरे को है लगता अपने, है कि वो पैसे से बचाने से अच्छा हाँ। इट इज वेरी मच कि वो चीज जो तुमको खुद को दर्द दे रही है ना वो निकालो। निकालो। निकालने का तरीका पता नहीं चल रहा है ना खुद को, हम्म, तो यू गो टू द एक्सपर्ट लाइक यू एंड जस्ट गेट हील्ड। Healed. हर एक चीज का अलग अलग बोलते हैं ना, हर एक चीज का अलग अलग कुछ ना कुछ तो ऐसा पॉइंट रहता है जहाँ पे वो चीज करोगे तो थोड़ा सा हील हो जाओगे। Heal हो आई थिंक जाओगे। सो। ये तो मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट आई जस्ट नो बिकॉज पता चलता है हम लोगों को लाइफ जैसी आगे बढ़ती है वैसे कि अपने को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, राइट? तो यही है कि प्रॉब्लम खुद को समझ में नहीं आ रहा है, तो यू शुड गो टू पर्सन लाइक यू as a coach, as a guide, okay, and they should get their self healed first. Exactly. कि खुद को क्या हो रहा है। एक सिंपल चीज है, अगर आपको दांत में दुख रहा है तो आप किसी सर्जन के पास थोड़ी जाओगे, आप डेंटिस्ट के पास जाओगे। अगर आपको आपके बोन्स में प्रॉब्लम हो रही है, देन यू विल गो टू अ ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट। लेकिन वो कैसा है, वो हर एक चीज का अलग अलग डॉक्टर अलग रहता है, अलग बट डॉक्टर है। मेंटल का डॉक्टर में एक ही बोलूंगी कि यू हैव ऑल द सर्विसेज अंडर वन रूफ वेयर यू आर like giving fantabulous first class services to the people. That's why Elevate Within has been created as a one-stop solution globally for all your mental health problems. Like one more, if time permits, one more thing I would like to share. A 12th standard girl, she called me up just before her exams last year. Okay. She was like, सर मैं एग्जाम देना नहीं चाहती। बोला क्यों बेटा, एग्जाम क्यों नहीं देना? वन ऑफ माय फ्रेंड्स डॉटर, ओके, शी जस्ट सेड मी अंकल मैं अभी एग्जाम नहीं दूंगी कल जाके। मतलब क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है? बोला सब भूल गई हूँ मैं, एग्जाम में क्या लिखना है मुझे याद ही नहीं आ रहा है। सो आई वाज स्टन्ड। मैं बोला भाई मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ है। जब मैं 10th की एग्जाम दे रहा था, मैं अपना सब कुछ भूल चुका था। हिस्ट्री का पेपर मेरे हाथ में है, मैं सब भूल गया था क्या हिस्ट्री क्या है। आई रिकलेक्टेड दैट मोमेंट एंड आई जस्ट सेड हर कि बेटा कुछ मत करो, आप घर जाओ आराम से, पानी लो, पानी लेके बैठ जाओ एक टेप चेयर पे और एक सिप बाय सिप पानी पियो आप, और एक सिप के साथ में आप डीप ब्रीदिंग करो। ठीक है, यू वोंट बिलीव, 1 घंटे के बाद में रात को 11 साढ़े 11 बजे शी मैसेज मी अंकल आई एम फाइन नाउ, आई एम गोइंग टू गिव माय एग्जाम्स टुमारो। व्हाट हैपेंड, द एंजाइटी लेवल्स just jumped up, pressure of exam, pressure of performance, वो जस्ट पाइल अप हो गया था और वो सडनली बर्स्ट हो गया। रात को 7 बजे, शाम को 7 साढ़े 7 बजे बर्स्ट हो गया वो। अब उसके फादर, हिज फादर बीइंग माय गुड फ्रेंड, ही जस्ट कॉल्ड मी अप कि भरत दिस इज द प्रॉब्लम। आई सेड जस्ट आस्क हर टू कॉल मी, आई विल टॉक विद हर। एंड थैंकफुली शी गेव द एग्जाम एंड शी गॉट गुड मार्क्स। Very good. These are small Excellent. things, because as a parent also and as a student also, we should understand you are not here to get yourself compared with anyone else. Don't become a pressure cooker. Be yourself. Learn to be yourself. That is very important. Bharat sir, thank you, and we are happy to have you here today. And literally, you have enlightened ourselves too. पता चला कि क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी, जो जो आपने जो टिप्स टिप्पणी दी उससे, तो
and I think जो viewers हैं हमारे, they will work on it, and obviously they will share their feedback to us. So thank you so much. Thanks a lot. Once again, thank you so much for inviting me over here. And UnInfluencer is really doing very nice. And I'll pray that it reaches to the next level. You reach to the million followers very soon. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you. Thank you so much.